My culture is different, my context was different. That is my point. We design according to the client. Are we really taking the culture and context correctly? मेरा ऐसा एक क्वेश्चन है कि as you said about the culture, It depends upon the geographical factors. Client जो भी Dololu, Sololu. Hi, good evening everyone. I am architect Habib Khan from SHK Amrita Architects, and I am hosting Nagpur edition of the Aristo Designers Roundtable today. And we have brilliant young minds from the industry with us. I am the only one with white hair, white beard. All of you are young, so here we are, and we're going to discuss a very interesting topic, designing for different cultures and context today. So it's a very interesting topic and I'm very passionate about it. I've been talking about it since last 30 years, I think more than your age probably. And it's very close to my heart, the topic. And I've always wondered when it comes to architecture, when it comes to, built environment, it's very easy to incorporate. I mean, for me, it's very easy to incorporate culture and context in architecture. But it has always intrigued me, how do we do it in interior design? How do we do it in inside spaces? So we'll have some discussion on architecture because we have some architects here, and we have with us today Nitin Bagani, Hitesh, Saluja, Pratik, Talwar. We have Disha, we have Neha, hello, Nikita, and Swati with us. So welcome all of you to this interesting discussion, and I hope we'll have a very meaningful and a wonderful time together today. Be at ease, let us be our own selves, right? So, like we said, before we start any conversation, so we're talking of culture and context. Context थोड़ा आसान है ना, मतलब आप लोगों को तो पढ़ाया हुआ है मैंने, भले ही आप भूल गए होगे अभी शायद, but तो context of where you are building, कि हमारा context क्या है, surrounding क्या है. There's a micro context, there's a micro and macro context. कि भी हम नागपुर में बना रहे हैं, फिर हम एक लोकेलिटी में बना रहे हैं कहीं, है ना, हम कंट्री में बना रहे हैं, महाराष्ट्र बना रहे हैं, ऐसा कॉन्टेक्स्ट इज डिफाइंड. बट व्हाट अबाउट कल्चर? कल्चर का डेफिनेशन मैंने जब इन्होंने बुलाया, मतलब सो आई वाज वंडरिंग कि यार कल्चर का डेफिनेशन क्या है. कल्चर तो हम बात करते रहते हैं, वी टॉक ऑफ कल्चर, वी टॉक ऑफ ये हमारा कल्चर है, यार वैसा क्यों कर रहे हो, हमारा कल्चर है. बट ये कल्चर है क्या, मतलब है क्या? हाउ डू यू डिफाइन दिस कल्चर? हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हाट कल्चर इज? तो बहुत लूजली कॉइन टर्म है ना, बहुत ही लूजली कॉइन टर्म है. टू मी इट्स लाइक अ अनियन. प्याज होता है ना, प्याज, वेरियस डिफरेंट लेयर्स, हर एक लेयर का मीनिंग. सो ऊपर में एक सुपरफिशियल होता है, जैसे सिंबोलिज्म, आइकॉनोग्राफी, देश का झंडा ना, मंगलसूत्र, बिंदी ना, ये टॉप सुपरफिशियल लेयर हो गया. फिर उसके बाद में हमारे ट्रेडिशंस, हर एक का अपना अपना ट्रेडिशन, रिलीजन, वैल्यूज, फैमिलीज, एंड देन कोर पे आता है अपना फंडामेंटल, है ना, पर्सनल जो इनसाइड, हाँ, इनर सेल्फ जो कि वो वेरी करता है कल्चर टू कल्चर, पीपल टू पीपल, फैमिली टू फैमिली, ऐसे हायरार्कियल रहता है. तो वो कल्चर, ऐसा मेरे हिसाब से, आई कैन नॉट डिफाइन कल्चर आफ्टर सो मेनी ईयर्स, बट नेवरदलेस लेट्स फाइंड आउट व्हाट कल्चर इज, एंड देन कल्चरल नुआंसेस आते हैं कि व्हाट इज अ नुआंस. सो वो सब हम डिस्कस करेंगे टुडे. सो सबसे पहले एक बात बताओ यार नितिन, आप बताओ. जी सर. What do you think, ये इम्पोर्टेंट है क्या, मतलब इसको आर्किटेक्चर में, बिल्ट एनवायरनमेंट में, या यूज करना इम्पोर्टेंट है क्या, मतलब? Sir, as it is said, we build spaces and the spaces built us. If we don't use the culture while designing, which is happening a lot of, for last decades or so, we are not designing for the culture. I'm not talking about the history. I'm talking about the culture we are following today, whatever may it be. So, we are not making spaces for the people who are using it. Either we are taking some examples from history and putting it here and doing it, or we are taking some examples from west, east, somewhere and doing it. So, we are not designing it for the culture or the, what I believe culture is, how I experience my whole day, how it guides my whole day. So, that we are not doing today. And because we are not designing it, we are not taking the culture ahead.
एक बात बताओ यार, एक बात जी सर। एक बात पहले अभी नितिन को कंटिन्यू, फिर अपन आएंगे वापस। एक बात बताओ कि जैसे यू आर डिजाइनिंग इन छिंदवाड़ा। यस सर। यू आर फ्रॉम छिंदवाड़ा। या आई एम फ्रॉम छिंदवाड़ा। आप छिंदवाड़ा में डिजाइन कर रहे हो, वहाँ का कल्चर यूज कर रहे हो, वहाँ का कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हो। तो अगर मैंने वो घर खरीद लिया कल के दिन और मैं नागपुर से हूँ, जी सर, तो इज इट आई विल नॉट बी कंफर्टेबल इन दैट हाउस? यू विल बी कंफर्टेबल सर, बट माई कल्चर इज डिफरेंट, माई कॉन्टेक्स्ट वॉज डिफरेंट। तो कॉन्टेक्स्ट मेरा छिंदवाड़ा हो गया। तो कल्चर आपके पर्सनल बिलीफ से जो आपकी पर्सनल स्पेसेस रहेगी, दे विल वेरी। सी ब्रॉडली मेनी स्पेसेस आर सेम, बट हाँ, आप इफ यू वांट समथिंग ऑन योर राइट, इट्स नॉट देयर ऑन योर राइट. Let's say you are right-handed and left-handed, so the design will change there. I'm going very micro, but yeah, that is the kind of thing we are talking in cultures also. अभी बहुत से लोग बोल रहे थे, पीछे बोलो whether he is right or wrong. मैं बोलूँगी उसका कुछ पॉइंट मुझे सही लगा. As far as I concern, we design according to the client, because we sit with the clients, what they want, फिर हम लोग उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, प्लस उनके कंफर्ट के हिसाब से, because we are not going to live in that particular house or place. Client is going to live, that he should be very comfortable. So that is my thought. And as he said, left and right, that is very correct. We should understand. Point, client के वाइज से ही कि लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड. जब तक आप क्लाइंट के साथ नहीं बैठोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा. So that is my point. We design according to the client. I have a question also. Are we correctly interpreting the culture today? ये जो सवाल है सबसे बड़ा, मुझे अभी 35 साल में नहीं समझा सर, क्योंकि हम 35 साल में नहीं समझा यार. हम जो कल्चरल डिज़ाइन बोल रहे हैं वो हम प्री मुगल एरा को कल्चरल डिज़ाइन बोल के आज ला रहे हैं. नहीं, उसमें एक फर्क है. Clients to clients. Client to client, yeah. But the overall, what I understand, sir, and then we came up with so many things. The Gen Z came, the mobile intervention came, the technology came up. Dololu, Sololu, whatever. वो जो बहुत सारी चीजें आई है सर. Something okay. So are I am updated, हाँ. So are we really taking the culture and context correctly? उसमें there's a difference, you talk. No? There is something called inheritance. There is something called heritage. There is something called tradition. Yes. तो culture is different from all this. Exactly. हम बोलते हैं मुगल आर्किटेक्चर है, Yes. हमारा वैदिक आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये हमारा इनहेरिटेंस है, ये हमारा हेरिटेज है. Heritage. हमारा कल्चर नहीं. कल्चर इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड रिलीजन्स एंड बियॉन्ड बाउंड्रीज. Maybe staying there. हाँ. उसके हिसाब से. I would like to add, maybe culture is something what we are practicing as a society in that particular time frame. What we are practicing collectively. What we are practicing today, being a global economy or globalization, we tend to follow global trends. We tend to drive ourselves towards global styles, and even the user is quite assumed by it. But I think when we talk about culture or I think we can incorporate it in terms of the core beliefs of the user, keeping that unique identity to that particular project and still being part of the modern times. Modern in the sense, the time period that project is being built. If it is being built in 2025, it should cater to that time. And if it was built in 1980s, maybe a different दो बड़ी इम्पोर्टेंट बातें सामने आई हैं. एक तो यू टॉक्ड ऑफ क्लाइंट मेकिंग एंड डिजाइनिंग फॉर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, एंड यू टॉक्ड ऑफ अभी व्हाट डिड यू टॉक? globalization. Catering to modern. ग्लोबलाइजेशन जो चीज़ है ना, ये सबसे बड़ा विलन है हमारे टॉपिक के अगेंस्ट. हमारे टॉपिक के अगेंस्ट. तो या तो ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस करो, या फिर ट्रेडिशनल रहो, या कल्चरल रहो, या कॉन्टेक्चुअल. Cocktail. Yes, exactly. तो हाउ डू यू डू दैट? आपने टाइम फ्रेम की भी बात की. किसने टाइम फ्रेम की? आप ही ने. यू टाइम फ्रेम की बात की. तो हाउ डू यू कीप दिस चैलेंज, बीच में हम कैसे रखेंगे? I believe, as I said, in the time frame where we are designing the project, first of all, with every time the needs changes, the user's requirement changes, so we should cater to those things. And as you said about the culture, sorry, I have a little different perspective on that. I don't think your culture and your globalization, or what we call modern today, are two contradictory parts. No, I think we can follow what our core beliefs are. For example, if I'm designing a house maybe for a Marwadi family, they tend to have collective families, larger families, but they can still have a modern house which might be connected to their culture in terms of the way spaces are designed. Since it's a
joint family, the spaces can be in that manner. If they worship, they are more into worshipping. Maybe they can have a bigger mandir space. Maybe they can have different kinds of kitchens, and the color palette and the aesthetic part that we call about can be incorporated, considering what is in trend with time also. Very well said. Very well said. Absolutely well said. It need not be if it's a Marwadi's house, it need not be bilkul Rajasthani Jharoka style. So for that, you'll be sitting with the client, right? Just You'll be asking and you'll be taking some ideas. having a personalized space is a luxury. As sir said, if I buy a house that is already done, I am from Nagpur and I buy a house in Chhindwara, so the person who has built it maybe had the luxury to design it the way he wanted. Now if some other person moves into it, they might have to renovate or they might have to live with what they are getting. As we buy ready-made clothes, we live with whatever fitting we have. But if you get a tailored suit, it is as per. But आजकल तो सभी रेडीमेड लेते हैं, टेलर के पास बहुत कम लोग जाते हैं. So that is because it's easy and it's cost effective. Choosy peoples are there. Only ladies? No. Even gents also, men's also. मैं रेडी बनता हूँ यार. Same as with apartments we are living in. there are many clients who get ये मतलब मुझे एक particular 3 BHK मिला है but उसमें भी मुझे वो desired चीज़ें नहीं है तो many of the clients are like हम renovate करेंगे हम थोड़ा बहुत spaces को redesign cases करेंगे so they design according to their willingness or their tastes I would say so that क्लाइंट की बात रहेगी क्लाइंट की ना. You talking of client. Yeah. And you want to. Indirectly, she also said about the client. Not directly, but indirectly. नहीं अभी हम आते लुक पे है ना the outcome of the project. जैसे ये भी हम देख रहे हैं सर ना ये तो फिर शोरूम में तो कई चीज़ें हैं. आपको अपना कल्चर इनकॉर्पोरेट करना है ना उससे बातें करनी है कल्चर से कल्चरल नुआंसेस को इनकॉर्पोरेट करना है ट्रेडिशनल करना है पर क्लाइंट बोलता होना ही नहीं मेरे को ये. we can I don't want this time. which He says नहीं मेरे को चाहिए नहीं मेरे को totally modern globalized interior चाहिए. तो how do you compromise on your values and your thought process? मेरा ऐसा कहना है कि पहले क्लाइंट के साथ बैठेंगे, उनका आइडियाज आ गया, फिर हम लोग उसको हमारे आइडियाज के साथ इनकॉर्पोरेट करके भी प्रेजेंट that things to the I understand. That is your soul. That is your soul behind your process. Design process है वो आपका. पर जो outlook जो आ रहा है उसका जो output आ रहा है आपका जिस ये जो आपका जो look दिख रहा है मतलब I'm talking of the look. I'm talking of the makeup that you do. Makeup that we do over our own selves. उसका अगर वजन नहीं मेरे को नहीं चाहिए ऐसा यार तो आप लोग क्या करते हो? नहीं मैं जो तो कल्चरल का बात कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ. We're talking of interiors, हाँ? We're not talking of architecture. We're talking of interiors, yeah. So compromise करते हैं क्या हम? एक्चुअली मैं उस केस में थोड़ा सा मिक्स कर देता हूँ. एक्चुअली क्या होता है ना कि कल्चरल और कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों को लेके उसको मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन वो हाँ यस जैसे वो स्लाइडर सभी बना हुआ है तो उसके ऊपर एक वुडन ही टेक्सचर भी है. अगर क्लाइंट चूज़ी है कि मुझे वुडन ही टेक्सचर चाहिए तो वो उसके साथ जा सकता है. प्लस दूसरी चीज़ उसमें जो ग्रिल डिज़ाइन है वो तो कई सालों से चलते आ रहे हैं तो दैट ऑल्सो कल्चरल है ना. तो ये चीज़ें हम कर सकते कंबाइन कर. हम ऐसा नहीं बोलते क्लाइंट को जाओ यार मैं नहीं करता तुम्हारा काम नहीं बोलते ऐसा. थोड़ा म्यूचुअली फिर थोड़ा टाइम उनके साथ हाँ थोड़ा टाइम स्पेंड होने के बाद समझ ग्रेजुअली हो जाता है. ऐसा कोई डिफिकल्टी अभी तक तो नहीं है. Once she said once, yeah. Got an advice from a senior designer saying you do some projects for the soul and some for the kitchen. yeah No, I do all my projects for my kitchen. ऐसा कुछ नहीं है. देखो आदमी ने प्रैग्मेटिक ये कॉलेज में सिखाते हैं कि यार तुम बहुत इगोइस्टिक रहो आर्किटेक्ट ऐसा डिजाइनर ऐसा कुछ नहीं होता रियलिटी में. अब घर के जाके सैलरी देनी है स्टाफ की किचन चलाना है बच्चों को अच्छा स्कूल में देना है अच्छी गाड़ी चलानी है. यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक नो इट्स अ फाइन लाइन बिटवीन प्रोफेशन एंड बिजनेस. तो नहीं अब ये बताओ यार जिसके बाद में ग्लोबलाइजेशन की तो बात हमने कर ली कॉम्प्रोमाइज की भी बात कर ली क्लाइंट की भी बात कर ली हमने. अभी कल्चरल नुआंसेस क्या हैं? व्हाट आर कल्चरल नुआंसेस? I think that is style, color, that makes the differences in style, color and pattern that reflect our traditions and our history and craftsmanship in our designs. That is nuisance. But nuances क्या हैं? How do we understand what are
nuances? With this So there role. so many things are in that includes pattern, colors. The colors what we are for us, that's not for the other countries or other persons will be the same. I'm just talking, see, for example, it's a red color. For us, red color is for the romance and fire. And in, I think so, it's a, yes. And in China, they believe for their, I think so, it's for their fineness and prosperity. White is for the wedding, and the colors plays the different roles in every culture. Peace. And Peace. Peace. Basically, we can say it depends upon the geographical factors, cultural, yeah, backgrounds and cultural differences play, history and everything. Yeah. major role in design. अगेन ये चीज़ें क्लाइंट के थॉट प्रोसेस पे भी डिपेंड करती है ना? यस, थॉट प्रोसेस पे भी डिपेंड करती है. So it's more about their personal beliefs, their personal followings, I suppose. And surrounding also. I would say surrounding environment. हाँ, तो हम nuances की बात कर रहे थे. We were talking of nuances, cultural nuances, and how to incorporate them in build form. तो कोई एक example, दिशा, can you बता सकते हो कि I would say color palette और traditional designs जो रहती है ना, those kind of we can inhabit those. अभी culture में जैसा चल रहा है, पुरानी चीज़ें बहुत सारी अभी नई trend में आ रही है, उसको अपन थोड़ा बहुत modernize करके we can reuse those things. तो कहीं किसी I would say किसी family में है ना, there are 2 or 3 generations living together. तो हर किसी को we can mismatch करके we can play with those traditional things, या कुछ ऐसे color palettes हो गए traditional वाले, उनसे अपन interiors में काफ़ी कुछ enhance कर सकते हैं. तो ट्रेंड की बात निकली जैसा ना, यू टॉक टू ट्रेंड, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इंटीरियर डिजाइनिंग जो है वो बेसिकली एक फैशन है, ट्रेंड है, एक स्टाइल है, मतलब है ना, जो कि टेम्पररी है. 5 साल में आपका कमर्शियल शोरूम है, 5 साल 6 साल में चेंज कर देते हो आप, है ना, फिर 5 साल में चेंज हो जाता है, कोई घर 10 साल में चेंज कर लेता है. तो ये सब चीज़ों में कॉन्टेक्स्ट और कल्चर इम्पोर्टेंट है क्या, मतलब डिज़ाइन करने के लिए? The time frame we are doing is important. Because the users, मतलब टाइम फ्रेम क्या बताइए? what kind of age the user is, what are his needs. A student from college, a married man of 30-35 and a man of 60 will have 3 different user needs for that space. And as he gets older, of in 7 years or so, his requirements changes. And that the need of interior designing, re-interior designing comes in. When I was 50 Yes, sir. and when I am 60 now, मेरी तो कुछ चेंज ही नहीं हो रही. पर सर सबके माइंडसेट्स अलग है या सबका work, then they are at your door. I personally think what is थोड़े जैसे older aged वाले लोग होते हैं ना, उनकी ज़्यादा requirements नहीं होती या उनको ज़्यादा changes नहीं होते. तो जो Gen Zs हैं या जो mid वाले हैं, उनको एक ही एरिया में they want 10 talking of gadgets, gizmos. Yes. The technology has also evolved very fast in last decade. So the changes that it's bringing to the residences and places are huge. तो हमारे जनरेशन ने जो देखा है ना, मतलब चेंजेस टेक्नोलॉजी के, पहले कंप्यूटर नहीं थे, प्रिंटर नहीं थे, ईमेल आया, फिर इंटरनेट आया, फिर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आ गया, अभी एआई आ गया. तो एवरी टाइम हम डरते थे यार, अभी ईमेल आ गया है, हमारा क्या होगा, अभी इंटरनेट आ गया, हम तो बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे. तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, कुछ नहीं हुआ. तो अभी एआई का भी ऐसे ही है. तो एआई का क्या इन्फ्लुएंस है, मतलब इन अब तो सभी चीज़ आप वो चैट जीपीटी लिख दोगे, इसमें लिख दोगे और सब मालूम कर लोगे, इमेजेस रेंडर करा लोगे. तो हाउ डू यू थिंक ये इससे कैसे रिलेटेड है, मतलब? आई वुड से जैसे 3D डिजाइनिंग जो जब नया आया था ना, उसमें वी नीडेड आवर कॉन्सेप्ट्स, आवर डिजाइन्स कि भाई मुझे क्या डालना है, मुझे क्या उसको इनकॉर्पोरेट करना है. अभी तो आई गेस देयर आर सॉफ्टवेयर्स वेयरइन यू जस्ट पुट योर 2D डिजाइन्स एंड द 3D इज आउट. So is that going to change? To create mood boards. Yeah. Is that going to change the profession? Somewhere or the other, I would At say. the end of the day, it is saving a lot of our time and our efforts. But when you aren't able to put your imagination or your thinking या थोड़ा बहुत जो है,
That's what I think. Just give the But prompt. that is not the final output. Yes, I yeah. can say. बट ये थोड़े टाइम का चेंज है. Yeah. थोड़े टाइम बाद फिर नीड लगेगी कि नहीं यहाँ पे तो कुछ तो भी Exactly. प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए. तो वो अगेन फिर ये चीजें. So again we are shifting to the modular furniture also, na? It has just taken the time. For example, I'll just tell you, Prom AI is a website where you can render a block 3D. And you have to give some reference images. I think most of the people that are designing has some certain inspiration, references. आप उस पे डाल दो, it gives you 10 options. You need not copy it, but it is widening the imagination of the designer as well, not just the client. So I think it is really saving our time, our energy, giving us more permutation combinations in much lesser time. It only depends, yeah. There are different pros and there are cons for the same thing. There are pros and cons for the same thing. This data is with the client also. For that, without the अब आपकी क्या जरूरत है? so that डिटेलिंग वो कारपेंटर कर लेगा. नहीं कर पाते हैं. अरे आजकल ऐसा होता है कि ये हमको चाहिए. निकाल के देते हैं. क्लाइंट का एक ही स्टेटमेंट रहेगा, फिर हमने आपको क्यों चूज किया है. Exactly. मेरा यही था pros and the cons which. अरे इन सब में कल्चर कहाँ से आ गया? कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आया? Western Culture culture can be is incorporated using lot of different materials, lot of patterns that In terms of AI, in terms of all these softwares. Do out of 10 images will bring that culture there. yes, क्या image मैं select कर रहा हूँ? yes, and Out of the 10 or 20 options which we have everywhere, the thing we select will bring that culture, that context, that belief in the project. AI is working on the prompts that you are giving. If I want to design a Vada style house, I am giving them prompts. I want columns that are carved. I want kota flooring. I want sloping roofs. So he is just a helping tool. जैसे computers जब आए, right? We were doing everything manually. Now you have Excel. They can just do it faster for you. So same way AI is just helping you to save time on your imagination. Nobody is telling you कि AI ने जो बना के दिया है आप साइट पे वही बना. आइडियाज तो आप ही डाल रहे हो ना कि क्या यूज But imagine we sit down and we think of 4 ideas in 1 hour. If the AI can give you 10 ideas on the same line, isn't it better? Isn't it widening our vision also? yeah. No, I'm not against AI. I'm not saying. There are just different points. Pe there are cons and there are pros. now we are using terrazzo, Morocco patterns. Dana flooring is back. Concrete Dana flooring. There's all is Kota again floorings are coming back in the in market and Aristo यूज नहीं कर रहे आप? सब्यसाची यूज कर रहे हैं, Aristo यूज नहीं कर रहे? हाँ? अच्छा. No. My question is, you are Gen Z. Which gen are you? Millennials. You're millennials. Okay. And who am I? Anyway, that is not a question. So, but no. My question is, you are before the Gen Z. You are the millennials. But tell me one thing: technology keeps changing. Yeah. But culture, context remains same. So how do you fuse these two together? Sir, the culture has to change with the user, the today's generation. The culture has changed. See, the college you were in, the culture of that college and the college you are teaching in today, My problem is that I was trying to get that culture into your college, no? So that the culture has changed completely. Huh. And we are taking the culture, the history as culture today. correct. We are pointing history and saying this is our culture. We have not upgraded it for the day. Basically. हाँ मतलब जैसे आज का No one wants to build a Taj Mahal today. It depends upon time to time frame, basically. now I'm doing a project of Vada. The client is staying there, means from the childhood. So she wants his house as a Vada. So I'm working on that. But I know the cost of that project and the things what I want to do. It's very tough to fit that themes or concept in their budget. बजट बड़ा इम्पोर्टेंट है ना? They want Vada, the same look. So ये superficial है क्या? मतलब ये थोड़ा superficial नहीं है क्या? कि कल्चर को ले आओ, कॉन्टेक्स्ट को ले आओ. Superficial है sir. Incorporate, as I said, in terms of patterns, materials, what likings are there. A lot of times the reason हमारी लाइटिंग तो चाइना से आ रही है अभी.
नहीं, lighting कल्चर कहाँ से आ गया? आप pots लगा सकते हैं. जैसे in one of my farmhouse project, we took terracotta pots and we hung it on the ceiling. Conscious. अच्छा अब एक बात बताओ, ये वेरी इंटरेस्टिंग है. एक बात बताओ कि क्या यूजिंग जैसलमेर, कोटा, you know, pots, terracotta, traditional materials, traditional elements. This is culture? No, sir. No, sir. This is not culture. The culture is the user, how he sees the space, enjoys the space will define culture, not the material or the look. I have taught you well. Huh? I have taught you well. Thank you, sir. You still remember, huh? Thank you, sir. So Disha was saying something. You were saying something about Culture. culture. हाँ ये मतलब you said terracotta नहीं terracotta नहीं. तो फिर क्या culture है मतलब? कल्चर मेरा एक ही सिंपल सोचना है कि कल्चर क्लाइंट जो भी उसका जो माइंड है ना, जो भी सोचता है, जो उसका मतलब बैकग्राउंड है, वो क्या सोचता है, वो कहाँ से आया है, आई थिंक दैट इज कल्चर. I think that is culture. Nutshell, most of the times our clients are our inspiration for the project that we are designing. What the client is, what Their requirements. what they dream of that space, we are the Yeah, as a whole is mixture of so many cultures. Cultures. We always say this, and then we are the country where we want bullock carts and bullet trains together. So the user is so different. So having culture in a nutshell or something defining it in a line is not possible. Not possible. Right. If someone is doing it, is doing wrong. No justice to the culture. He is marketing. It's marketing. There is no definition for that. So हितेश आप बताइए यार, आप चुपचाप बैठे हो, कुछ तो बोलो. Yeah, basically all it depends upon the you can say geographical factors also. If we say culturals, it depends upon the geographical factors, climate and everything. It matters which city you are, which state you are. It depends. That depends on with the interior, sir. Are we talking of interiors at the moment? But are you As well. The person is coming from where, that matters. Are you agree with this, sir? कि cultures or the interiors are depends on the city or the climate? मेरे हिसाब से तो फैशन है. I told you, interior फैशन 5 साल में बदल जाएगा, 2 साल में नया ट्रेंड आ जाएगा. Believe me, that depends on. we can have elements that are timeless probably, and जैसे आपने बोला when you were 50 and now you're 60, nothing has changed much for you. So same way maybe the house for a user like this can be designed in a way where things are not temporary. Color palette, materials, designing elements which should be timeless. Like for example, using teak wood or wood will not go out of style. Using stones, natural stone will not go out of style neither today nor 30 years down the line. So using elements like that maybe. So we're talking of eternal materials which are long lasting. Trying and incorporating timelessness in your design with few elements that can be changed. For example, nowadays tropical wallpapers are very much in trend. So maybe you can put that on one wall. If you're bored of it for after 5 years, just change that. Few such elements that are easily changeable can be based on the trends, but the core design should be more of timeless thing. अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि किसी के साथ में कि एक क्लाइंट आया है, मतलब कल्चर की बात कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है, ट्रेडिशन, ऐसा नहीं हुआ कभी? और बोला ये प्रोजेक्ट करना चाहिए यार, हमने करना ही चाहिए ये प्रोजेक्ट, पर मैं फीस नहीं दूंगा तेरे को, तो क्या करोगे आप? फिर बोलोगे अरिस्टो को मुझे कमीशन दे दे, ऐसा कुछ बोलोगे? नहीं. अच्छा, और क्या किया then? What did you do? It was a farmhouse, so again it is very much theme based. Just when they came for a farmhouse, they said कि city से 50 kilometers दूर I have a farm, now I want to do a farmhouse, so that should be very traditional. That should have clay tiles, that should have quota. So I think that is where, as of a layman, that is where culture resides. But as a designer, we can take conscious decisions of incorporating those elements in modern spaces as well, is what I feel. One thing is very heartening to note that your generation is very conscientious as far as your ideologies and thought processes are concerned. You are more professional than what I thought you are. So anyways, so good. But अभी और क्या डिस्कशन करना है? किसी को कुछ बोलना है?
It's our duty to always connect with the culture, to convince our clients. तो जो एक बात बताओ यार, हम सब तो पैंट शर्ट में बैठे हैं. Why are we sitting in Western dress? हम कल्चर की बात कर रहे हैं. Today's culture, Why are we not? culture is shirts and What she is saying, professionalism. तो इसका मतलब है कि मैं कुर्ता पजामा में हो तो I am not professional? नहीं सर. अगर तू साड़ी में आती तो? साड़ी इज Sir. अरे साड़ी is कुर्ता पजामा is not. Kurta pajama is a traditional thing, हाँ. and shirt pant is the cultural thing for today. Because the 90% of majority is following it. I suppose 95, 97. अरे 95% कुएं में जा रहे हैं तो आप थोड़ी कुएं में कूदोगे यार. सर बट वो नहीं हो रहा है ना. 97% कुएं में नहीं कूद रहा है. अच्छा. The culture will be defined by what everyone as a whole is doing. Because culture is See, a collective responsibility of a group over a period of time. Yes sir. है ना? Very correct. तो अभी हम सब पैंट शर्ट पहन रहे हैं इसलिए हम भी पैंट शर्ट पहन रहे हैं. लड़कियां भी पैंट शर्ट पहन रही हैं, है ना? अच्छा. shows professionalism. If you are going somewhere जहाँ पे depends upon the area जहाँ आप जा रहे हो. अगर आप प्रोफेशनली कुछ जा रहे हो तो you'll have to wear professional things. अगर आप कुछ और different parties में जा रहे हो, traditional things में जा रहे हो तो you'll have to wear traditional. तो same thing designs में भी वैसा हो. रिसेप्शन में पहुंच गया हाफ पैंट में. तो वो कह रहे यार ये अलाउड नहीं है यहाँ पे. मतलब किसने बोला अलाउड नहीं है, मैं आ रहा हूँ. कह रहे हमारा कल्चर नहीं है, है ना? तो इज दैट करेक्ट? So that comes into designs also. Yes, Design also. yes. Something. Every family or every segment in this society has different cultures. Those different cultures is what we have to inhabit according to our clients. I was doing partnership with a. जैसे हाँ हाँ. जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज है वेरिन किसी मुस्लिम कम्युनिटी में मैं किसी हिंदू वाला वो कल्चर का इनहैबिट नहीं कर सकती, और या किसी हिंदू कल्चर कम्युनिटी में आई कैन इनहैबिट थिंग्स विच आर ऑफ नॉट ऑफ देयर कल्चर या उनकी कम्युनिटी का. सो कम्युनिटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशल और अ डिफरेंट रोल इन डिजाइनिंग स्पेसेस. देन सेकेंड इज द कल्चर ट्रेडिशनल. ये सब फिर चीज़ें फॉलो अप लाइन में वैसे. I was doing a project. We had a lot of partnership projects in Goa. तो जो हमारे partner architect थे, he was in his half pant, shirt tucked in, belt and all, है ना? Bermudas में. तो I said यार तू ऑफिस में ऐसे आ रहा है क्या? तो कह रहा हम तो ऐसे ही आते हैं, है ना? हाँ हाँ. पर वो ऐसे डिजाइन में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता उनके, मतलब ये कि होता है? होता है. We cannot point it out, but हाँ होता तो हो. होता तो है. होता है. Of course. How we went to meet a government official. He was also in a half pant बैठा हुआ था अपनी chair पे. हाँ. So now we have shortlisted one thing कि culture area to area differ. एरिया टू एरिया. नहीं तो मेरा एक सवाल था, मतलब मुझे नहीं समझ रहा, आप लोग you enlighten me कि हाफ पैंट में मैं पहन के आऊँ, शॉर्ट्स पहन के आऊँ, या पैंट शर्ट पहन के आऊँ, या कुर्ता पजामा पहन के आऊँ, तो इसमें इंटीरियर में कुछ फर्क पड़ता है क्या? मतलब इंटीरियर डिजाइन में कोई फर्क पड़ता है क्या? सही सर. हाफ पैंट तो ये कैजुअल है. मेरे प्रोजेक्ट में कैजुअल लेगा. No, I'm not talking of that. I'm not talking of that. I'm talking of a client who is always in a Bermuda or shorts, or who's always in a kurta pajama. Does your design reflect that? It should reflect that. It will reflect that. It should, yeah. It should. It should. It should reflect. Half over agreeing, half over not agreeing. It should reflect. अच्छा तो how does it? बताओ एक हाफ पैंट वाले के लिए कैसे डिजाइन करोगे बताओ. डिजाइन में बट उसका थॉट प्रोसेस ही वैसा. So if he is a regular, No, difficult question. यार सीधा आंसर करो. very difficult. If he is regularly in that set of dress, someone said, I don't remember his name, if you want to understand what is the color combinations and things a client wants, see his wardrobe once. For interior designing, if you see a wardrobe, you will understand what is his taste for his interiors. If he is coming in that set of things, then he'll need something which is Gen Z kind of stuff. I suppose majority of them are Gen Z who will be in Bermuda, if we are talking about Nagpur. So in Goa it will be different thing because everyone is like that. But here in Nagpur he'll have to have that Gen 50 degrees, 48 degrees, 50 degrees. Why can't you wear a half pant to your office? We don't wear, sir.
as a culture, we have not decided to wear it yet. If I come to your office to meet you in a half pant, you will once see. You will find me in a half pant. Casual. You will find me in half pants in summer in my office. So, but if I come or a vendor of yours or a client of yours comes in a half pant with a, that Goa kind of t-shirt with a hat, you will once, I think, once you will think, यार ये तो casually आ गया, एकदम ही light में ले रहा है. Client को छोड़ दीजिए, but vendors और contractors के लिए तो आप ये सोचेंगे शायद. या in general will think like that in. ऐसा हो जाता है उनको देख के. तो इससे फर्क पड़ता है क्या डिजाइन प्रोसेस में फर्क पड़ता है इसका डिजाइन प्रोसेस? एवरी टाइम कोई भी बरमोड़ा पे नहीं आएगा, कभी ना कभी तो उसे प्रोफेशनल ही होगा. Designing an ashram, ठीक है, and you are designing a residence, the ashram, you will have a different set of things you will design, sir. Because वहाँ का user is all that dhoti, kurta, so you don't need these things, a lot of these things there. So if a person is in kurta pajama and a Bermuda, so you'll have to design something different. Maybe he'll need a gaming zone there. Right. Maybe he'll need few more things in his wardrobe. As we design a residence, I think it is a place where people come to calm down. So the entire space goes like that. Actually, that was our issue. मैं ये सोच रहा था, हम सभी रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट ऑक्यूपेंसी की बात कर रहे हैं, पब्लिक ऑक्यूपेंसी की बात ही नहीं की हमने. In a nightclub or a restaurant or a hotel, maybe the perception, like the approach for the design will not be a single person user, but maybe the approach will be to create an impact on multiple people as a society. और ये सवाल था मेरा अभी आप लोगों से, बिकॉज मैं नहीं जिसका डिकोड कर पाया, आई कुड नॉट फाइंड एन आंसर. ये था कि व्हेन देयर इज अ मल्टी यूजर, एक मॉल है समझो, है ना, सिनेमा थिएटर है, पब्लिक प्लेस है, तो उसमें कहाँ से कल्चर और किसका कल्चर? यानी एक बंदा आएगा, साउथ इंडियन भी आएगा वहाँ पे, नॉर्थ इंडियन भी आएगा, तो हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट दैट? We have copied that from West. We have copied that from somewhere else, and we are designing it in the same guidelines we have been seeing. We have not designed it for the culture that we call our cultures, I suppose. Don't you think that is the place where designer has a liberty and responsibility to guide the community in a certain direction? If you design a mall that is based not typical glass facade, but certain earthy elements. For example, if we talk about airports, the way Mumbai airport has been designed, it's a modern structure with a lot of cultural aspects in it. So that was a conscious design, conscious decision made by the designer. तो वो कल्चर निकाल सकता हूँ मैं, सारे जो एलिमेंट्स लगाए उन्होंने, सुपरफिशियल पेंटिंग्स एलिमेंट, आगे निकाल लूँगा कल्चर और बोलूँगा अभी निकाल लो कल्चर यहाँ से, अब इसमें ब्राजील का कल्चर डाल दो अंदर, तो भी बिल्डिंग काम कर जाएगी, इंटीरियर भी काम कर जाएगा. And the climatology and the geography and the sustainability of the project has to come into picture. If you design a building in Kashmir, the approach towards the structure with respect to climatology and geography will be very different than the approach you have in Kerala. Right. That is context. But that is context again, not the culture. Context where you. So ये बहुत ही फाइन लाइन है कल्चर और कॉन्टेक्स्ट की, है ना? बहुत ये सेम है क्या दोनों? सेम भी हो सकते हैं ना? सेम भी हो सकते हैं नहीं? सेम नहीं है. If you are making a South Indian temple in Nagpur, बहुत से टेम्पल हैं. बहुत से है sir. So we are making the same kind of structure. So we have taken the culture, but we have not taken the context there. तो मतलब कॉन्टेक्स्ट और कल्चर अलग अलग है. अलग होना चाहिए. Very good example. If you look at the infrastructure in Dubai, I think they have just copy pasted West irrespective of their context. So much of heat, so much of sun, but you have full glass buildings. I think we are also doing. Unfortunately, we are. Yes. We have not developed that design for the culture for public spaces yet. Again, this is where the designers have to make conscious choice, because the layman doesn't come and tell you कि आप glass लगाओ या आप steel लगाओ. You as a designer have to put up. That's the designer's. So this happened when we designed CA Road. We took the culture and context. We created those huge shaded spaces. Today we are not doing that. We are not creating any shaded spaces for the public to walk. Yeah, we are just making big. What for example, you know, एक तो shaded corridors. Plus you have captive advertisement. आप उसमें walk कर रहे हो shaded corridors में, तो आपको वही दुकान दिख रही है जो आपने देखनी, सारी दुकानें पास से दिख रही हैं आपको.
करेक्ट, तब भी हम नहीं कर रहे, मिस्टेक पे मिस्टेक किए जा रहे हैं। हम वही बना रहे हैं सर, फिर से आप तो वो ना करने वाले तो यंग जनरेशन वाले। वी ऑल आर रिस्पांसिबल। चेंजिंग और धीरे-धीरे चेंज हो रहा है ना। For example, if we talk about Chandigarh, it's a planned city, and whichever square you are, it still looks the same because again it was a design by a foreign architect. So there you see that the context is there probably 100%, but the culture is not. Culture is not. You feel you are in an alien space, and that is why at certain point it might feel dead. अभी आप अगर लॉ कॉलेज स्क्वायर से रविनगर स्क्वायर जाते हो, आपको एक चेंज ऑफ स्पेस फील होता है, लेकिन ये स्पेस चंडीगढ़ में नहीं फील होता। मतलब यू विल से कि कल्चर भी इम्पोर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है। Go hand in hand, I would say. They go hand in hand. Go hand in hand. Yeah. So you cannot take culture out of context and context out of culture. Ideally they should be balanced, but a lot of equally times balanced. people might consider context but forget about culture. Lot of times. And in the name of culture, we just bring traditions back. Yes. Or prehistoric things back. Yeah. Just putting. Just like you said, कि Bombay airport पे we have put something, some murals. Tomorrow remove it, put Brazilian or American, and they'll become a Brazilian or American Brazilian space. culture, right? So what fine line है, मतलब इसका मतलब है ना? It's a very fine line that we all agree that it's a very. That is a client study outcome that can define culture. अब let us talk of, हमने बात तो की थोड़ी बहुत प्रोफेशन के बारे में, how the face of how is it changing, like we were talking ना off the camera, कि प्रोफेशन चेंज हो गया है ना, बिजनेस बन गया, और आजकल वो मतलब किस तरह से काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हट गई, मतलब नो ये मटेरियल लगा दो, वो मटेरियल लगा दो, ये महंगा लगा दो, ये सस्ता लगा दो, अपना काम हो गया। ये सब इट्स बिकम assimilation of products basically rather than the soul being there inside, soul of design, what you guys were talking of earlier। तो हमको तो और ये लगता है, हमको तो वो मिसिंग है भी, जैसा है ना इमोशन मिसिंग। हाँ, यहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है तो चलो ये लगा दो, वहाँ कम मिलता है वो लगा दो, तो इट हैज बिकम अ प्रोडक्ट एसिमिलेशन। एंड इवन क्लाइंट फील्स की नहीं यार, हम लोग इतना मतलब कर रहे हैं। ये तो हमको लगता है, ये आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? हाँ, कई बार क्लाइंट को भी लगता है। नहीं, कई बार ये भी हो जाता है, क्लाइंट है ना, जब प्रोजेक्ट हम हमारे मतलब हैंड ओवर करने वाला रहता है तो उनको लगता है कि फीस थोड़ा कम बताना चाहिए, तो वो अपना बजट भी कम बता देते हैं। फिर क्या होता है कि जब एक मिड टाइम आ जाता है प्रोजेक्ट का, तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हायर साइड चली जाती है, तो उस समय पे क्या होता है कि अपना डिजाइनिंग और उन सिलेक्शन दोनों मैच नहीं करते एक दूसरे के साथ, और उस टाइम पे फिर क्लाइंट बोलता है कि ये तो थोड़ा सा अलग चाहिए था, फिर हमें रिमाइंड करवा के देना पड़ता है कि शायद आपने उस समय पे मुझे बजट कम बताया। As a client, I feel ये उनका भी ड्यूटी है to go ahead with the designer they perfectly trust. Exactly. If you don't trust that designer, please do not go ahead with them, because हर step पे doubt करना, ultimately their product will be at loss and our time and efforts will be at loss. So I think you should definitely go with the person you can have complete faith in, and once you have selected that person, go ahead with their vision. Trust them and go ahead with their vision for the best outcome, because when a designer is also investing 1 year, 2 years, 5 years of their life for a particular project, it's their baby also, and they want. I tell my clients, my favorite dialogue है, बहुत से clients को याद भी हो गया है, मतलब यार ऐसी स्टेज पे आ गए हो जब अभी आप ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे लेटे हो, You don't tell the doctor यहाँ से लगा स्कैल्पेल, exactly लगा ना, forget it, अगर तूने अगली बार से बोला ना तो गलत जगह ला दूंगा स्कैल्पेल। So this is what I tell my client, और उसके बाद में उनको समझता है ना, because समझता नहीं यार कि इसका क्या रोल है, जैसे you talking of trust, वो नहीं समझता उनको। I think having faith is very, very important in your designer, and a lot of times people hire a designer and then don't listen. They just keep telling मुझे तो ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। I tell clients कि sir, if that is the case, you are wasting your money on a designer. You should go ahead on your own for the best results. प्रोजेक्ट छोड़ देते हो, फिर काम छोड़ देते हो? Sir, lot of times I think in the initial conversations ही आपको समझ में आ जाता है how the project is gonna go. So I think 70% of the time we judge and we stop on the initial conversations. In case we go ahead, तो I think एक mutual understanding के साथ आगे बढ़ना। What do you do when you ठीक है चलो अभी एक हम फिर से personal client की बात कर रहे हैं। What do you do when the client is faceless?
गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, सीईओ चेंज हो गया, चीफ इंजीनियर चेंज हो गया. That's a very interesting place to work with, sir. They have more to do with the estimates and less to do with designs. So then we can add our personal beliefs, and not to an extent of 100%, but small things that can bring change, especially in planning. At the stage of planning, you can design it functional, aesthetically pleasant. I should not say very good, but pleasant. And then you can add those small spaces which are not there in government buildings or I just love working for them. Yes. You're not wedded to one wife. Yes. You don't have to listen to one wife. Yes. But sir, there is some mediator in between. I think so, yeah. No, but Government sector. वो सिर्फ ना फाइनेंशियली मेडिटेट होता है, वो डिजाइनिंग में आपका कोई ये नहीं करता। You and I. They don't care. They Yeah. care balls about what you're doing. मतलब ये मेरा estimate है, ये मेरा प्रोजेक्ट चलो बस that's it. फिर आप बॉक्स बनाओ कि क्या बना रहे Times the designs are not even seen. Yeah. The estimate is seen. हो? very And that's very bad for the country. So but That we that, have invested. दिखते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं सीखते हैं डिजाइन. very rare you will see. Like very rare. So the level of projects you are doing, the level of projects you are doing. So please cut this. Sir, but a lot many times in small nagarpalikas and this kind of government organization which is doing crores of investment, the planning is not needed. They get it done. A crore building some non-architect is designing. So that's the sad part. That is very sad part. That's the sad And that's very bad for the country itself. Because that we are investing so much of money without getting it designed. It's your money. It's our money which we are investing, basically. But अभी हम टॉपिक से डाइग्रेस हो गए. टॉपिक अलग. So I'll bring a FL Wright quote to. I'll bring a FL Wright quote. He says, "The mother art is architecture. Without an architecture of our own, we have no soul of our own civilization." Right. True. Right. That is what it distinction यही है. Architecture and engineering का distinction यही है. Architecture is the soul of any built environment. That is the fundamental difference between an engineering output and architectural output. पर हम थोड़ा डाइग्रेस हो गए. मैं आपको थोड़ा एडवाइस देना चाह रहा था. अलग हो गया एकदम. हाँ अलग हो गया थोड़ा. हाँ हम कल्चर में वापस आते हैं. तो there was an architect called Hassan Fatih, Egyptian architect Hassan Fatih. He revived traditional construction techniques, Nubian vault, and earthen construction, adobe construction in Egypt. उनका एक कोट है कि अगर आपको ये कल्चर को पॉपुलर करना है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स को अगर आपको पॉपुलर करना है, तो आपको सोसाइटी के हाईएस्ट रंग से शुरू करना पड़ेगा, है ना? जो हाईएस्ट है सोसाइटी में, स्टेटस में, फाइनेंशियल स्टेटस में. एक अंबानी जी अगर बना लेंगे या शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन बना लेगा अपना घर मिट्टी में, तो सभी लोग फिर मिट्टी में बनाएंगे घर. फेमस पर्सन. अब अपने को भी लगता है ना, शाहरुख खान बोलेगा ये साबुन यूज करो, है ना? दीपिका आगे पाडुकोन बोलेगी यार तुम ये लिपस्टिक यूज करो, तो आप यूज करोगे, है ना? मैं बोलूंगा तो कोई नहीं यूज करेगा. We can influence. So how do you think it affects in your मतलब ऐसा हुआ है कभी आप लोगों के एक्सपीरियंस में कि मैं जो अपना थॉट प्रोसेस था मेरा, उसको हमने यूज किया वगैरह? definitely, I think as you said, the social media today is influencing a lot of decisions for the end Neighbors, user. I would say neighbor का घर देखा, they want. Yes, Exactly. but I think more than social media, we are spending People so are much more time. aware nowadays. So, as you said, we have to create our own brand. If you really believe in your values and you think they are true, promote them and try and educate the end user on that. Sure, we had a very nice discussion, very, very enlightening discussion, and I am enlightened by your generation's thought process, and I feel design is in safe hands in our country. Thank you, sir. So we had a wonderful session, lovely session. I So, would have, thank you. I would ask you a question. Like, Asha, I am on the other end? Okay. like you and me, we have a lot of difference of age gap. तो मेरी थिंकिंग प्रोसेस क्या है ना, अभी थोड़ी मॉडर्नाइज्ड है, आपकी थोड़ी आई गेस बहुत ही मॉडर्न हूँ मैं. अच्छा, सॉरी, हाँ बोल. मेरा ऐसा एक क्वेश्चन है कि जैसे कुछ ऐसे बड़े आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स रहते हैं ना, तो उनके हिसाब से हमारा काम या हमारा अभी मॉडर्नाइज्ड वाला जो
डिजाइन है या क्या, तो है ना दे पिक कोप और यू नो दे पिक आउट पॉइंट्स कि अरे शी हैज डन ऐसा, आई वुड हैव डन दिस। तो कुछ आपके हिसाब से आई वुड आस्क इज इट ओके या व्हाट That reflects the insecurity of that senior designer or architect. He is insecure. Insecurity. He is insecure. Yes, exactly. Man, I'll never do. I am also insecure by you guys that you will take over my practice very soon. But you know, I never do that. See, you have given a response in a particular way because you believe in a particular fashion. I believe in a particular way. But thank you so much for having a wonderful discussion today. And we have realized that culture is important in design. Context is important. Both are interdependent. We cannot take each away from each other. And we also talked of so many other things related to this. And thank you for being with us and being a part of so much, sir. wonderful Thank evening. you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.